गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम इनायस फ्रॉम अभ्यासम डिफेंस ग्रुप्स। आज हम करने वाले ईमेल राइटिंग। अब जैसे हम देखते हैं कि ईमेल राइटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट और इंटेलेक्चुअल टॉपिक है जो काफ़ी सारे एग्जाम्स में आता है। अब आप देख लो कि आपके स्कूल एग्जामिनेशन में 8th ऑनवर्ड ईमेल राइटिंग की काफ़ी वेटेज होती है और फिर RIMC के पेपर्स में और नवोदय स्कूल के पेपर्स में ईमेल राइटिंग ज़रूर आता है जो कि 10 मार्क्स का आता ही आता है। और हम क्योंकि 2 आवर्स का पेपर होता है तो इतना टाइम ईमेल राइटिंग को नहीं दे सकते, इसलिए आज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी कि आप ईमेल राइटिंग को कैसे जल्दी कर सकते हैं और कैसे आप उसे समझ सकते हैं जल्दी और इजी वे में लिख सकते हैं ताकि आपको जल्दी ज़्यादा स्कोर हो और आपसे टीचर जब आपका पेपर चेक कर रही है तो वो इम्प्रेस हो जाए। तो लेट्स सी। अब ईमेल राइटिंग सबसे पहले होता क्या है? ईमेल राइटिंग को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल आता है ई से और फिर आता है मेल। यहाँ पर ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। उसके बाद ईमेल जो है वो एक मीडियम है लिखने का किसी भी ऑफिशियल या अनऑफिशियल वे में। अब आपने काफी सारे ईमेल्स लिखे होंगे या नहीं लिखा तो लिखने का एक बार ट्राई जरूर करना। जैसे आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, टीचर्स को, फ्रेंड्स को या किसी कजिन को ईमेल लिख सकते हो या फिर आप अपनी प्रिंसिपल को लिख सकते हो, अपने टीचर को लिख सकते हो किसी भी इश्यूज के रिगार्डिंग। या आप जैसे कोई भी आपकी टीचर है वो स्कूल छोड़ गई है, आप उनसे बात करना चाहते हैं, उनके कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उनसे, तो आप उन्हें ईमेल लिख सकते हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। तो वो 2 वेज में कैटेगराइज हो जाएगी, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अब हम देखते हैं जो रिटन कम्युनिकेशन है, यूज टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन। अब इंटरनेट पे हमें अब तो बहुत सारे मीडियम्स आ गए हैं ना, व्हाट्सएप आ गया है, इंस्टाग्राम आ गया है, फेसबुक आ गया है और टेलीग्राम आ गया है जिसपे आप बात कर सकते हैं। पहले जब ये आया था, जब ईमेल का बिल्कुल शुरुआत हुई थी तो उस टाइम पे यही होता था कि मेल्स पहले तो हम घर घर भेजते थे ना, कि जैसे हमारे घर पे पोस्टमैन आता है वो मेल्स देके जाता है। फिर हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल्स बनाई जिससे कि हम लोगों से जल्दी बात कर सकते हैं या जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। उसके लिए बनी थी ईमेल्स जो कि इंटरनेट के वाया इंटरनेट एक रिसीविंग इंफॉर्मेशन और सेंडिंग इंफॉर्मेशन का मीडियम बन गई, कि बात करने का एक जरिया बन चुका है, ठीक है। अब ईमेल जो होती हैं वो मोस्टली प्रोफेशनल होती हैं, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में, बैंक्स में, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए अब तो हमारे पास काफी सारे मीडियम्स आ गए ना बात करने के। फोन पे कॉल कर लो या व्हाट्सएप पे बात कर लो या कुछ भी कर लो, बट पहले तो ये सब नहीं होता था। तो अब जो ईमेल्स है वो यूजुअली ऑफिशियल वर्क के लिए यूज होती हैं, जैसे कि आप प्रोफेशन में चल जाओ, किसी भी टीचिंग में चले जाओ, ऑफिस में चले जाओ या कॉलेजेस में चले जाओ, वहां पर ईमेल का बहुत काम है। अब ईमेल की हिस्ट्री क्या है? जो ईमेल है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ईमेल वो ओरिजिनेट कब हुई? वो ओरिजिनेट हुई 1970s में। ये हम क्यों जान रहे हैं? ये हम इसलिए जान रहे हैं ताकि हम समझ सके कि ईमेल शुरू ही क्यों हुआ, क्या जरूरत पड़ गई हमें कि हमें ईमेल लिखना पड़ा। ईमेल शुरू हुआ 1970s में जब रे टॉमिल्सन ने, कंप्यूटराइज इंजीनियर थे वो, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया @ सिंबल। हम लिखते हैं ना, जैसे आप कोई भी ईमेल लिख लो XYZ@gmail और yahoo.com। तो ये जो @ है इसे हम कहते हैं @, ठीक है। सेपरेट्स यूजर्स एंड होस्ट नेम्स। @ का काम क्या था? यूजर और होस्ट का नाम जो है सेपरेट करना, उसके बीच में एक बाउंड्री लगाना, एक बैरियर लगाना, ये था @ का काम। क्रिएटिंग द फर्स्ट ट्रू ईमेल सिस्टम ऑन। ये चीजें वैसे याद रखनी जरूरी नहीं है, बट आपको एक बार पता होना चाहिए कि हम ईमेल लिखते ही क्यों हैं, ठीक है। ईमेल का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन ये थे। अगर आप कभी भी जनरल नॉलेज में इंटरेस्टेड हैं या आप जीके भी करते हैं साथ साथ, तो आपको पता होना चाहिए कि ये 1970s में शुरू हुई। इन्हें रे ने शुरू करा, @ सिंबल दिया जिससे कि होस्ट और जो सेंडर है उसके बीच में एक बाउंड्री या फिर सेपरेशन लाइन बन जाए। फिर उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ ईमेल्स। टाइप्स ऑफ ईमेल्स मैं आपको पहले ही बता चुकी कि 2 तरह की होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। emails are basically classified into 2 types, formal email
इनफॉर्मल ईमेल। अब फॉर्मल ईमेल क्या होती है? कोई भी ऑफिशियल पर्पस के लिए भेजी गई ईमेल, जैसे कि आपने मुझे एक ईमेल भेजी कि हम अभ्यासम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वो ऑफिशियल होगी। या आप मेरे फ्रेंड हैं, आपने मुझे कुछ लिखा कि हाँ जी हमारा हाल चाल ऐसे है, या मेरे दादाजी बीमार है, या मेरी मम्मा का बर्थडे, आप प्लीज आना, इनवाइट कर रहे हो आप, तो वो इनफॉर्मल हो जाती है। अब इनवाइट वाली ईमेल्स भी दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल, डिपेंड करता है। अब आपका स्कूल आपको, आप जैसे किसी भी स्कूल के एल्यूमिनाई हैं, आपका स्कूल आपको स्कूल विजिट के लिए बुलाता है, तो फिर वो फॉर्मल होगी। अगर आपको, या फिर इनफॉर्मल कैसे हो सकती है कि मैं आपको बुला लूं कि मेरे घर पे हाउस वार्मिंग पार्टी है तो आप प्लीज आना, तो वो होगी इनफॉर्मल। अब वो लिखने के जरिए से या किस तरह से आप उसे लिखते हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। A formal email is written to send or receive any informal information pertaining to official work, ठीक है। एक फॉर्मल जो ईमेल होती है वो क्यों भेजी जाती है? इंफॉर्मेशन को ऑफिशियल वे में सेंड करने के लिए। अब इनफॉर्मल क्यों लिखते हैं? इनफॉर्मल ईमेल्स इज मोस्टली यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ रेगुलर कन्वर्सेशन। जब आप एक रेगुलर टाइम पे, एक इंटरवल पे कन्वर्सेशन करते हैं किसी से भी, अपनों से, बड़ों से, छोटों से, या अपने साथ वालों से, पीयर्स के साथ, किसी के साथ भी, तो उससे, जैसे कि फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, एनी पर्सनल, इंडिविजुअल, तो वो होती है इनफॉर्मल। जब बात करने का जो वे होता है वो थोड़ा मतलब फॉर्मल नहीं होता, आप बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं होते, बट आप बहुत ज्यादा रूड भी नहीं होते, ठीक है। अब हम समझेंगे, ये थोड़े से ना फैक्ट्स हैं, या फन फैक्ट कह सकते हैं हम इसे, कि मतलब हम थोड़ा सा जान ले ईमेल्स के बारे में। When was the first email ever sent? I guess मैंने आपको अभी बताया। The first email was sent by Ray Tomlinson in 1971। अब 1970s नहीं, अब यहाँ पे एग्जैक्ट बता दिया कि 1971 में ही भेजी गई थी, ठीक है। सेकेंड होगा, हाउ ऑफन डू पीपल चेक ईमेल्स ऑन एन एवरेज? आप अपने दिन में कितनी बार ईमेल चेक करते हैं? क्योंकि एवरेज पे लोग 15 बारी एक दिन में अपनी ईमेल्स चेक करता है, विच इज सो इंटरेस्टिंग। हाउ मेनी ईमेल्स डज द एवरेज पर्सन हैज? अब इतने सारे ईमेल अकाउंट्स हैं, तो एक इंसान के पास एवरेज कितने अकाउंट्स हो सकते हैं? नो, कितने हो सकते हैं? 1.8, which is not more, like this, ठीक है। लेस देन 2, मोर देन 1, विच इज बिकॉज कईयों के 2 होते हैं, कईयों के 1 होते हैं, कईयों के 0 होते हैं, कईयों के 3 होते हैं, तो इनका एवरेज निकल के आया 1.8, ठीक है। 1.8 ऑन एवरेज। व्हाट आर द चांसेस ऑफ ईमेल्स बीइंग ओपनड आफ्टर 24 आवर्स? हम ईमेल आती है हमें कोई, 4 घंटे तक अगर ईमेल खुल जाए तो खुल जाए, वरना उसके बाद वैसे ही ईमेल खुलने के जो चांसेस है वो 50% हो जाते हैं। तो 24 आवर्स के बाद तो बहुत रेयर होता है कि कोई ईमेल खोले, ठीक है। अब हम देखेंगे ईमेल का फॉर्मेट, जो कि फॉर्मल इनफॉर्मल का सेम है। सबसे पहले आता है रिसिप्टेंट्स ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके बाद डेट। अब डेट का क्या है? सबसे बड़े ना हम गलती ये करते हैं डेट की। डेट में हम क्या करते हैं, जैसे यहां पर मैंने क्या गलती करी, हम इस वे में नहीं लिखेंगे, चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हम लिखेंगे 24 जनवरी 2000 whatever the year is going on, whatever year is going on, ठीक है। हम डेट को है डॉट्स में नहीं लिखेंगे, हम 24 1.2x ये हम नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि उससे नंबर कटते हैं। अब आपके फॉर्मेट जो है वो 2 से 3 मार्क्स कैरी करता है। अगर आप गलत फॉर्मेट लिखोगे तो मार्क्स कम हो जाएंगे। फॉर्मेट के जो नंबर होते हैं वो आपके हाथ में होते हैं, उसको कभी गलत नहीं लिखना। खाली फॉर्मेट लिख कर आओगे तो गलत हो जाएगा, बट बीच में बॉडी भी लिखनी जरूरी है। जैसे 3 नंबर फॉर्मेट के हो गए, 5 बॉडी के हो गए, तो आपको 8 मार्क्स मिल गए, ठीक है। इसका ध्यान रखना है। और वोकैबुलरी हमेशा सिंपल
और इम्प्रेसिव यूज करनी है, लंबे लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखने। अब ईमेल की जो वर्ड लिमिट होती है वो होती है 50 वर्ड्स, उसको एक्सीड करने की जरूरत नहीं है, उससे कम भी नहीं लिखना चाहिए। बट हाँ, अगर आपके 60-70 भी चले जाते हैं तो इट्स ओके, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रॉम सेंडर्स ईमेल एड्रेस, अपना ईमेल एड्रेस पहले किसका लिखना है, जिसे भेजनी है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अभ्यासम को भेजनी है, तो अभ्यासम डिफेंस ग्रुप्स @gmail.com, और फिर आपकी डेट आ गई। उसके बाद आ गया सेंडर्स ईमेल एड्रेस, आपका जो भी ईमेल एड्रेस है, फॉर एग्जाम्पल xyz@gmail और yahoo whatever you use.com, और perhaps if you have a Microsoft account तो सब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अब सब्जेक्ट का क्या होता है कि ये बहुत क्रिस्प होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी जो है यूजुअली एक ऑफिशियल पर्सन को इतने सारे ईमेल्स आती है कि वो सारी की बॉडी नहीं पढ़ पाता, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि वो सब्जेक्ट लिखे। अच्छा, सब्जेक्ट कैसे लिख सकते हैं, जैसे उन्होंने लीव लेनी है तो लीव फॉर 2 days, बिल्कुल क्रिस्प। और अगर उन्हें रीजन जानना है तो वो बॉडी पढ़ेंगे। अब जैसे एक और ईमेल का सब्जेक्ट हो सकता है कि leg injury due to ill infrastructure। तो यहां पर जो है उन्हें पता लग गया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से क्या हुआ, लेग इंजरी। अब जरूरी नहीं है लेग इंजरी हो, माइनर इंजरी भी हो सकती है, मेजर भी हो सकती है, फ्रैक्चर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये वन ऑफ द एग्जांपल्स है कि आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बॉडी, नहीं सैल्यूटेशन, आई एम सो सॉरी, सैल्यूटेशन। उसके बाद आता है जैसे कि रिस्पेक्टेड सर और मैम, या आता है डियर, ये आता है इनफॉर्मल में, डियर एंड whatever whoever you want to salutate. For example, I take XYZ, dear XYZ, fine. Then comes the body, 50 words body, deeply and detailingly explaining something but crisp, alright. इसमें भी आती है मेन बॉडी, upper body where you ask how they are, like hi, hello, yeah, good morning, how are you doing, hope you're doing good, I'm doing good as well, yeah, I am fit as fiddle and hope you are doing so as well. फिर आती है conclusory note, कंक्लूडिंग नोट कहते हैं जिसे। कंक्लूडिंग नोट में क्या आ सकता है, होप यू हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, या काइंडली एक्सेप्ट व्हाट आई एम सेइंग, ठीक है, ये सब आता है। उसके बाद फॉर्मल क्लोजिंग नोट, इसमें आप लिखते हो योर्स सिंसियरली, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, या बेस्ट रिगार्ड्स। नाउ यू कैन इवन राइट योर्स लविंगली, योर्स ट्रूली and all that, depending formal है या informal है। Yours sincerely is the most appropriate thing written for a formal email. Even for letters, if you're writing a letter, yours sincerely is the best. Then sign off, signature line, bid goodbye to the recipient at the end. Have a good day, enjoy your day, or something like that. Enjoy your evening. Whenever you're writing the email, write that. Then, key reasons for writing emails. Why do we write an email? Why do we write an email? What is the need to be writing an email? Why? Emails, but why? When you have WhatsApps, Instagram, Facebook, Telegram, Snapchat, then why emails? Communication, a very better communication which is crisp, to the point, then comes record keeping. Now you may delete a chat, someone else may delete a chat, but they would never be deleting their emails. And perhaps even if you do so, you will be having it in your recycle bins for a while. Then comes professionalism. This is the main reason why we write emails.
We write emails for professionalism, profession, official language, for looking like a officially good person. For example, you're writing an email to your principal. You may write a letter as well, but the principal may not be available to read the letter in the evening or perhaps at night, but she would definitely or he would definitely be available to read the email at any point of the day when they open the app. Then comes efficiency. This is again a language efficiency, internet efficiency. This again is a very important reason to be writing emails. Now you can't send letters abroad, overseas. You can't be sending letters. They would take so much time. For example, you need an urgent conversation, very urgent, on point, and right now. So you would be sending an email because it has a global reach. Global reach, you can send it anywhere at any corner of the world and person can get it. And it is so quick. Then comes organization. When you're working in an organization or an infrastructure, educational or any work related, business related, whatever, this is why you write it. Because you want to formalize your organization. You don't want informal medium of convo, which is WhatsApp. WhatsApp, no matter how much we try to use it, even if we use business WhatsApp, it is still informal. The only formal thing is email. This is formal. I hope you get that. Then, this. When you're sending an email, either on mobile phones or on laptops or on iPads or PCs, this is the dialog box that is going to open in front of you. The kind of dialog box that is going to open in front of you. Alright? Here you will be writing whatever person you're going to send an email to. For example, ABC Institute @gmail.com. Now, emails have advanced themselves, or you may say Gmail has advanced itself. When you're writing an email, it gives you prompt for all the emails starting of that name. For example, I am writing it to ABC Institute, I write AB Insti. So he'll be giving me ABC Institutional classes, ABC Institutional coachings, and ABC Institute. And now these may even have some numbers, like this has 9, this has 18, this has nothing. But here I have to address this one, so I'll tap on this and this go up. Alright? Then comes the subject. Why am I writing an email? Leave. This is the main reason, or probably some teasing in this institute, or probably some need of notes. Whatever reason making you write this. Then subject, the body. Here comes the body. You list down your reasons 1, 2, 3, 4. Obviously, you'll not be listing it down, but then you'll just make a quick mind map in your head that why am I writing this? Notes, which gives you what? Exposure, allows you to understand, and then many more. And then you will be writing a goodbye, yours sincerely, and have a good day and all that. And then you'll be sending this. Now, we have so many other features as well. What is this? This is to send an attachment.
attachment, okay, which could be JPG or whatever, PDF or PPT, Word document, any kind of document, image, dustbin to delete and send to send. All right. Then we'll be doing formal emails now. Formal email examples. 13th January 2025. Now, here we did not write 13 dot something something dot 25 dot something something. We will not be writing dot 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 and something. We will be writing in the full form like 13th July 2025. Alright? From head manager xyz@gmail.com to xyzteam@gmail.com. We'll be writing from to, and then we'll be writing the subject. Why am I writing an email? Change in office timings for monsoon season. Now recently you've seen how floods were happening and monsoons were almost ruining the whole nation. So even the offices were somehow affected. They had to face the consequences and all that. So now we'll be writing an email for changing in office timings for monsoon seasons. So we'll be starting with hello team. Now who is writing the email? Head manager. He's writing head manager to the team, to his team, to all the people who's coming under him. He's writing an email to them. Hello team, this is to inform you that the entire team at top management has decided to revise the office timings for the entire monsoon seasons. Now what is he saying? He has made it very crisp and to the point that the top management has decided. The top management has decided to revise the timings for monsoon seasons. Alright? This decision has been made in consideration to all the employees traveling from further distances for office daily. Now, because you're having an office in Chandigarh, doesn't mean you'll be coming from Chandigarh or nearby area. You might be coming from Panchkula or Zirakpur or even Ambala to your office daily. Now, because of monsoons, which were blocking roads, almost damaging them, making the communication very different and difficult, they have decided to revise all the timings in consideration. In consideration is कि अपने employees को ध्यान में रखते हुए they are changing the timing. The city has been bad traffic conditions in monsoon, which makes it difficult for employees to reach the office on times. Now, some offices have the rule, like obviously every office is disciplined and punctual of timing, but some have those card punching timings, which would lead you to be standing in front of the management and giving your reasons for why you were not being able to come on time. So, which is why the management, being very considerate, is revising the timings. Thus, the office timings have been changed from 10:30 to 6:30. Now, maybe the office was starting at 9 and ending at 5, which is now be changed to 10 to 6:30. This will be effective from tomorrow, which is, this is called, that is 14th July 2025. We look forward to your cooperation and support to other staff members. Thanks and regards, Head Manager XYZ Private Limited. Now have a look at this one as well. This is an informal email. 23rd August 2025 from Poonam Kapoor to Anjali Mishra. Now, when you're making your email usernames, it's not necessary that you will be writing just your name. You can always add numbers, like your birthdays and your birthdays on 31st. So you'll be writing XYZ
31st at the rate and so. Or your birthday month is 1. So XYZ 311 at the rate dot. Whatever you're gonna write, Gmail or Yahoo or Microsoft, whatever. Subject, I am going on a school trip. Dear Anjali. Now here the salutation is a kind of loving. How are you? It's been a long time since we've written emails to each other. Now what is she saying? That it's been a long time she's written or she has received a letter from either of them. I heard from your mother that you have won the first prize in inter-school debate competition. Now when you're writing the introductory body of your email, you may always write that your mother or your father or someone told me this about you, or so I got to know this about you. So that would be extensifying your this body. It would be stretching long, giving you more words, giving you an exposure of, like, sometimes you have the topic where you can't write much in the main body because you can see how short and crisp it is. So for that you have to, like, be sure that you write a big of this and a big of this so that you justify this as well, because this as a whole would be counted for your words. All right. So now I am very happy for you. She's exclaiming that she's very happy for whom? Anjali. I want to tell you that my school has organized a small trip to 3 days to 𝐘𝐨𝐻 National Park in Dehradun. Now she is going to Dehradun and she is very interested in telling her friend that she is going to Dehradun to a national park and she will be enjoying there. I'm really excited for the trip. We would be doing a jungle safari there, though I'm a bit scared. It's going to be an exciting trip. Now that she's a bit scared. Now obviously when you're going to a national park or something, you're excited as well as scared as well as anxious and as well as nervous, but you are more of excited. You have an adrenaline rush and you're very interested in what's going to happen and how many animals you're going to see and all that, what you're going to explore. I'm looking forward to it. I really miss you. I hope to meet you soon. Come back home so we can talk to each other for hours. Now she's saying come back home so that we could talk for hours like we did in the childhood. You can obviously write that you want to talk to in hours like you did in childhood. Informal emails. Now, tips for writing email writing. Email have to be drafted correctly and written nicely. Now this I have told you, drafting as well as the need to be writing the correct address and writing your address correctly. Some tips are as follows. We'll be reading them on a crisp note and I'll be explaining those to you. Enter the correct email address. This is very necessary, that you would be writing the correct email. If you write the wrong one, you're sending it to the wrong person. Keep it short and concise. If you're writing long emails, maybe the person may not be interested in knowing what you're saying. Include only important and relevant information. Do not be writing I did this and I did this and I had my breakfast, or telling your management that I did this and that and whatever. Don't tell them the whole story. Just make it only important and relevant. Then use language and tones as per the requirement. Do not use informal language in formal and formal in informal. Like formal and informal works, but in formal language in informal emails work, but informal language informal does not. That is going to make a very bad impression of you. Make sure the message to be sent is clear and understandable. Do not write a language which the person cannot understand. Do not. And also make sure to use simple, impressive English, not something very
very high, so that the person has to use dictionary. That is going to irritate them and make small sentences. Keep an interesting subject. This is very important. Interesting subject, and a very important thing is that interesting as well as very informative, so that the person may not have to waste their time reading your body. Though they should, as an examiner they would, but sometimes people are so busy that they cannot. Proofread your emails before sending this. This is very important. Whenever you're writing something, make sure you proofread them, because you may tend to make mistakes which is going to make a very bad and ill impression of you on the person who is going to read it. Thank you. Please do subscribe to our channel, and if you want, you can also call us on the given contact for classes, either online or offline. Thank you.